Good evening, all the students of class 10. Welcome to all of you in physics class once again. Okay, and today I have come in front of you with a new video. Here is my topic is resultant resistances of parallel connection. Okay, first of all we will know about what is parallel connection. Okay, here is the parallel connection. The circuit is given. Here is the diagram is given. R1 and R2 resistances, they are in parallel and they joint between the same point A and B, so they are said to be parallel. Here is the given definition also. When two or more resistances are connected between the same 2 points, they are said to be parallel connection, or it is said to be connected in parallel. Okay, now we have come to find the formula for the resultant resistances in parallel combination. Okay, and here is given between the same 2 points A and B a battery of V volt between the same 2 points. Here is the diagram, circuit diagram. I1 and I2 are the two parallel. I1 and R2 are I1 is the current passes through R1 resistance and I2 is the current passes through R2 resistance. As we know that there is a potential difference is fixed or constant in between this type of circuit or among the parallel connection. Okay, and but current will be changed, current will be different. Okay, and so here is given I1 is the current passes through R1 and I2 is the current passes through R2, and V is the volt potential difference passes through the whole circuit, and I is the total current passes through the whole circuit. Okay, and here is given R, capital R is given resultant resistance in parallel connection, and V the total current, total potential difference passes through the circuit. Okay, and now here is given the total current I is equal to I1 plus I2 in the circuit. Here I is splits into two parts, I1 and R2. There is I1 and I2. Okay, so I is equal to, we can write I is equal to I1 plus I2. Here is, suppose that it will be our equation 1. Okay, and now suppose the resultant resistances of this parallel combination is R. Okay, and by the Ohm's law, as in the previous videos we have also discussed about Ohm's law. Here I equal to V by R, and this is the equation, and let us suppose this will be our second equation. And now again using Ohm's law for the each resistances, we will write here this I1 equal to V by R1. Here is I1 equal to V by R1, then I2 equal to V by R2. This one will be equation 4. And now we putting the values of I1 and I2 from the equation 2, 3 and 4. Here is the 2, 3 and 4 in the equation 1. Okay, putting the values of equation 2, 3, 4 in equation 1, we will get here is the V by R, that is equal to equation 1. Here is I equal to V by R, and here is equal to I1 equal to V by R1, and plus I2 equal to V by R2. And now here is the V is common on the both sides and V is outside, and then we take 1 by R equal to V is also outside on the right side, and 1 by R1 plus 1 by R2. Here V and V cancel on the both sides. Okay, and now here is the 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Here is the expression for resulting resistance in parallel connection. Okay, and here is we will states that the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel is the equivalent, that is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances. Here is R is the equivalent resistances or total resistances, and here is the R1 and R2 are individual resistances. Okay, there is the formula. एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये अच्छी तरह से ध्यान देंगे. आज फिर से आप लोग को वेलकम, आप सबको फिजिक्स क्लास में, क्लास 10 को फिजिक्स क्लास में हम
स्वागत करते हैं। और देखिए ये दिया हुआ है, हमने यूज़ किया है पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। समानांतर क्रम में हम रेसिस्टेंसेस को, प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ते हैं वो तो आप देखेंगे यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन ये R1 R2 है और दो सेम पॉइंट के बीच में जो कनेक्टेड रहता है इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और मैथमेटिक्स के हिसाब से भी आप देखे होंगे ये दोनों पैरेलल की तरह लग रहा है, पैरेलल रेज की तरह लग रहा है। ये दोनों, ये जो है हमारा जो रेसिस्टेंस है दोनों पैरेलल है, क्योंकि दोनों को एक्सटेंड जब करेंगे बोथ साइड कभी ये दोनों मिलेंगे नहीं, इस कारण से भी ये पैरेलल कहलाएगा। अब देखेंगे इसमें कि एक फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब देखें किस तरह से रिजल्टेंट कनेक्शन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके लिए देखिए एक हमने सर्किट तैयार किया है। आई है टोटल करंट, आई को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, I1 और I2। ये R1 रेसिस्टेंस है और ये R2 रेसिस्टेंस है, और I1 है रेसिस्टेंस, ये करंट है R1 के लिए और I2 करंट है R2 के लिए। ठीक है, ये अब एक जान लें अब कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और फिर हमारा करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, स्प्लिट्स होता है, कई भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग शेयर कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दो रेसिस्टेंसेस के बारे में। यदि दो से अधिक रेसिस्टेंस होगा उसी तरह से हमारा बढ़ते जाएगा, जैसे है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से क्रम से बढ़ते जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे ओम्स लॉ का प्रयोग किए हैं। पहले हमने देखा टोटल करंट जो है I वो I1 प्लस I2 दोनों आपस में बराबर हो गए। दोनों ये दोनों को हमने देखा I इक्वल टू I1 प्लस I। यहाँ देखिए I टोटल करंट है, ये स्प्लिट दो भाग में बढ़ता है, ये I1 और I2। तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। और फिर सपोज कर फिर हमने देखा कि ओम्स लॉ का प्रयोग किया हम लोग, और ये हमने देखा यहाँ पे कि I जो हमारा V/R, ये पहले भी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा, इक्वेशन 2 है। और फिर यूजिंग ओम्स लॉ और ईच रेसिस्टेंसेज, ये I1 और प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए करंट हम निकालें तो ये I1 हमारा आया V/R1 इक्वेशन 3 और I2 V/R2 इक्वेशन 4 आया। अब फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन 2, 3 और 4 से हम लोग भी I1 I2 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 में, और वही हमने किया यहाँ पे। तो आप देखेंगे क्या यहाँ लिखा हुआ भी, नाउ द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम द इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन द इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में 2, 3, 4 से वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग ये निकाले हैं I के जगह पर V/R, और ये I1 है तो V/R1 और प्लस यहाँ पे I2 है तो V/R2 जैसे हमने निकाला ये इक्वेशन 4 से। अब ये दोनों तरफ भी कॉमन ले लिए हम लोग, ये भी कैंसिल हो गया, और फिर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये हमने देखा। अब ये इसका हिसाब से इससे निष्कर्ष निकलता है इस एक्सप्रेशन से कि रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस, जब दो रेसिस्टेंसेस को हम ये क्या कहते हैं पैरेलल के रूप में, समानांतर रूप में जोड़ते हैं, तो इसका जो असर, इसके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस जो आता है वो दिया हुआ है क्या, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ये 1/R रेसिप्रोकल के रूप में हम यूज़ करते हैं। सीरीज में हम लोग डायरेक्ट जोड़ते थे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 1/R रेसिप्रोकल लेते हैं से हम लोग ये पैरेलल कनेक्शन में। और ये आज के लिए इतना है आप सबके लिए, ध्यान से आप देखेंगे इसको। फिर से आप लोग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम, हैव ए नाइस डे।